and finally death. Next slide. ROS attacks cells in vital organs and is the root cause of disease and aging. So, next slide. Our real enemies are endogenous reactivity and mortality. Triacid, this is a very, very important theory that has been put forth very recently, which seems to 40:1 today, and a relative absolute decrease in omega-3 fatty acid is led to imbalance which lead to diseases. So this is the slide which tells you what is omega-3. The man does not have genes to put. मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि सभागार में उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर रमेश जी जो सीसीआरएस के डायरेक्टर जनरल हैं वो भी सभागार में आ चुके हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ में हमारे अन्य सहयोगियों में प्रोफेसर वाई के शर्मा, फॉर्मर प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, और हमारे अन्य विद्वान प्राध्यापक बंधुओं, और साथ में एनडीएमसी के जो हमारा एक होस्ट इंस्टीट्यूट हमारा होस्ट है, इसलिए उनका मैं स्वागत करना तो नहीं, लेकिन उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभागार में सब उपस्थित हो चुका है। उनका स्वागत करता हूं। इसके बाद में मैं अपने रिपोर्टियर को माइक देता हूं कि अग्रिम तीनों लेक्चर के लिए वक्ता को आमंत्रित करें। थैंक यू वेरी मच। The equilibrium is necessary and equilibrium must be shifted towards the omega-3, not to the omega-6. So thank you. And in this series, the next lecture is Professor E.K. Tripathi from Haridwar. He will tell us about the secondary prevention of ischemic heart diseases in Ayurveda. So over to Dr. Tripathi. Honorable Professor Ram Singh ji, my guru, my mentor of the dais, and dear friends. Indeed, it is a matter of great pleasure for me to be here this morning. I thanks to Professor G.S. Tomar sir for inviting me and giving me a chance to interact with you people. In fact, my topic of deliberation is secondary prevention of ischemic heart disease and Ayurvedic perspective. Why there is need of secondary prevention, particularly in cardiovascular disorders. We are living a life where, in the quest of success and in the gratification of our wants, we have created an atmosphere that is poison in our society. Ayurveda, the ancient medicine, has all the time talking of factors related to the lifestyle, but the context for today, the increasing number of cardiovascular disorder and particularly ischemic heart diseases, that too particularly in the Asian Indians, is a matter of great concern, increasing, and according to a data, the Asian Indians are 4 times vulnerable to the cardiovascular disorders as compared to the other population of the world. It is a matter of concern for we people, and this is why there is strong need of secondary prevention. Though Ayurveda is always talking of primary prevention of various heart diseases and nature of pains conceived by Sushrut, and even before in Vedas and Puranas, there is description of various heart disorders and pains are found, giving a clear indication that
heart disorders were not new, were occurring in the classical times as well, but their increasing incidence and the increasing role of Ayurveda in their prevention is the need of our. Next please. Again I have listed the various nature of pains, types of pains described in Ayurveda. I am particularly stressing here these nature of pains, excluding 3 or 4 types of pains nowhere described in any of the medical literature in any pathy except Ayurveda. You will see these are the more than 10 nature of pains described in Ayurveda. I just want to give an overview of what Ayurveda conceived about the heart disorders. Next please. Again these are the nature of pains. Next please. Here simply I am quoting the Samprapti of Hridrog, and especially I want to refer the last line, Rasa Maruta Sambhava Kavitta Urdasta Maruto Rasamochita Hadista Kurte Shulam Uchwasa Rodakam Param Saha Chulam Itkhato Rasa Maruta Sambhava. Rasa Maruta Sambhava. Where from the ras is coming? Ras is coming from our diet, our ahar drabya. So, and that ras is again affected by some environmental factor and our lifestyle factors. So, this is the basically ras added with the vata is responsible for the pain in heart and some other heart disorders. So there is very well description of pathological factors, how the etiology grows and how it progresses in the heart with the help of Rasa Maruta Sambhava. Next. Again this is the Dushetva Rasam Dosha. Here again, by some other author, is the importance of Rasa Dosha, the visheshan of Rasa Dosha as a primary etiological factor for heart disorders. Next. In this list, the important signs and symptoms found in like stress disorder, stress factor, manasho dukkha hetva. So, on one hand, there is importance of Rasa Maruta Sambhava as the primary causative factor and the Manasho Dukkha Hetva as the aggravating or the triggering factor for cause of the heart disorders. So here comes the role of some psychological modification, psychological stress buster techniques to prevent a patient from heart disorders. Now, good versus bad cholesterol. Here, we all know about the cholesterol, good cholesterol and bad cholesterol. As we know, these two cholesterols are like a balance. On one hand, there is good cholesterol, HDL cholesterol, and the other hand, some others, LDL, triglycerides and other cholesterols. But the important fact, the ASEAN pattern, I have just quoted, the increasing incidence in ASEAN Indians 4 times as compared to the other nationals, because ASEANs are genetically predisposed. Why this incidence is higher? Because of the genetic predisposition. And about the good cholesterol, in ASEAN Indians,
the HDL levels most of the time found below normal levels. At the same time, LDL cholesterol and triglycerides found above higher, but the important fact, the total cholesterol most of the time remains normal or below normal. So, most of the time physicians commit fault in advising or diagnosing the condition of atherosclerosis. Mainly physicians are going for the investigations of total cholesterol, and in ASEAN pattern of dyslipidemia, it is mostly normal. So one should go or insist for the total lipid profile to find out the ASEAN pattern of dyslipidemia. Next. Saturated fat, it basically means the fat is hydrogenated. The hydrogenated fats are mostly saturated fats and they remain solid at room temperature. For a common man knowledge, one should know the oils or fat which remains solid at room temperature are coming under the purview of saturated fats. And they are bad because they increase the level of LDL, decrease LDL level and increases the total cholesterol. Next. What are polyunsaturated fats? Our previous speaker have dealt at length on this topic. They are unsaturated fats. They remain liquid at room temperature and most of the time even in refrigerator. They are good for us because they help the body in getting rid of newly formed cholesterol. So the polyunsaturated fat or the PUFA is having preventive role in the incidence of atherosclerosis and other ischemic heart disease. Next. Similarly, the monounsaturated fats, they are again liquid at room temperature and they also start to solidify when kept in refrigeration. So this is the difference between PUFA and monounsaturated fats. They help in decreasing the total cholesterol and lower LDL. Next. So same is about the trans fatty acids. Although they are unsaturated fat, but they are not good for our health. Where do they find? My observation from the last 10 years, and they had 2 or 3 episodes, but now they are on Ayurvedic medicines and lifestyle modification, and they are very well prevented. So the carry home message: falling down is not a defeat. The defeat is when anybody refuses to get up. So this is now the wake up call. Get up and be united for the cause of Ayurveda and spread the message of preventive role of Ayurveda in the heart disorder. Thank you. Thank you, Professor Tripathi. Because our chief guest is about to come within few minutes, so the rest of the paper shall be read in the third session. Thank you. So please wait. Please bear with us. And now to the chairman, sir. On behalf of chairperson and organizer, I would like to thanks to keynote speakers Dr. C.S. Pandey, Professor Hegde and Professor A.K. Tripathi for their valuable information. Of course, lot of things are there to convey with these papers, but here we are running short of time because our chief guest is about to come. So, with the permission of chairman, I would like to conclude the session
with the remark that of course these 3 papers, they covers a wide range of our lifestyle disorders and they are very good Ayurvedic answers. So thank you all of you, and now the mic is to the chairman of this session. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भाग लेने के लिए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदि सभी लोग मंचासीन हो चुके हैं। मैं इस कार्यशाला की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री कर्ण सिंह जी, जो कि सांसद हैं, चेयरमैन ICCR हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, पूर्व यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पोडियम पर प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर RS सिंह, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर BHU, पूर्व कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में सुश्री अर्चना अरोरा, NDMC के जो चेयरमैन हैं, हम हमारे इस मंच पर आसीन हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यशाला के चेयरपर्सन के प्रेसिडेंट के रूप में प्रोफेसर GS तोमर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर DP आर्य से मेरा अनुरोध है कि कृपया पोडियम पर आए। पूर्णम भक्तिराम जनता जनता प्रसन्नो धर्मंतरी स भगवान भविकाय भूयाय। आराध्य देवों का नमन करने के पश्चात, उनको पूजन करने के पश्चात, माल्यार्पण करने के पश्चात हमारे मुख्य अतिथि पुनः मंचासीन हुए हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा में अतिथि देवताओं का स्वरूप माना गया है। अब यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देव स्वरूप अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका नमन। इसके पश्चात डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, हाँ सर, अभी सबका मन है सर। इसके पश्चात अपने विशिष्ट अतिथि सरस्वती की प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ पर आए हुए प्रोफेसर RS सिंह के सम्मान के लिए डॉक्टर DP आर्य से निवेदन करता हूँ कि वह उन्हें माल्यार्पण कर सम्मान।
डॉक्टर एस.के. आर्या से मेरा निवेदन है कि कृपया प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर का सम्मान करने के लिए। डॉक्टर महेंद्र पाल से मेरा निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर का माल्यार्पण करने के लिए। प्रोफेसर पी.एस. श्रीवास्तव जी से मेरा निवेदन है कि कृपया विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। आज की सभा के चेयरपर्सन के रूप में वरिष्ठ प्रशासनिक सेवी सुश्री अर्चना अरोड़ा जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर उमा चतुर्वेदी से निवेदन करता हूं। डॉक्टर साधना यादव से निवेदन करता हूं कि कृपया चेयरपर्सन का स्वागत करने के लिए। डॉक्टर संतोष कटारिया जी से निवेदन है कि कृपया आए एवं चेयरपर्सन का स्वागत करें। डॉक्टर सुभाष आपसे निवेदन है कि कृपया प्रोफेसर जी.एस. तोमर का स्वागत करने के लिए। ओके सर। डॉक्टर गांधी से मेरा निवेदन है कि कृपया प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर का स्वागत करने के लिए। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मेरा निवेदन है कि दर्शन के लिए व्याकुल थे, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। उनके स्वागत करने के लिए, अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर टी.पी. आर्या से निवेदन करूंगा कि वह कृपया उनका स्वागत भाषण पढ़ने के लिए। एवं सभागार में उपस्थित आयुर्वेद फिजिशियन ऑफ इंडिया एवं एनडीएमसी आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी बंधुओं तथा अन्य समागत भाइयों एवं बहनों, अत्यंत हर्ष के साथ मैं राष्ट्रीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम विद्वान माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, पूर्व स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री भारत सरकार का आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस कार्यशाला की गरिमा को समुन्नत किया है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार, निदेशक एवं प्रेरणा स्रोत आयुर्वेद मनीषी प्रोफेसर राम हर सिंह जी, पूर्व उप कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिनके कुशल निर्देशन से ही इस कार्यशाला का आयोजन संभव हो सका है। कार्यक्रम की अध्यक्षा सुश्री अर्चना अरोड़ा जी, सीनियर आईएएस चेयरपर्सन एनडीएमसी का मैं आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिनके सहयोग से यह सर्व सुविधा युक्त सभागार ही नहीं अपितु अन्य सभी कार्यक्रमों